Okay, students, so let's get started with O-level physics, October-November 2023, paper 1, variant 2, 1 hour का paper है. चलो, so let's start with this. Okay. The diagram shows the level of liquid in a measuring cylinder. The scale is marked in centimeter cube. Okay. What is the volume of the liquid? भाई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या है इफ यू रियलाइज दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 दिस विल बी 21. अच्छा इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं फॉर द स्टूडेंट्स वाचिंग इट ऑन मोबाइल. This will be 21, 22, 23, 24. The volume of the liquid comes out to be 24 cm cube. Okay. The diagram shows the distance time graph for a car. The car is traveling along a straight road up a hill. बेटा ये distance time graph है. What is the gradient of distance time graph? Distance time graph का gradient क्या represent करता है? Speed. Can you realize we have a constant positive gradient here? ये एक line है तो इसका gradient क्या होगा? Positive and constant. That means आपकी speed भी क्या होगी बेटा? Positive and constant. If your speed is positive and constant, which quantity of the car is constant and always greater than zero? देखो एक्सेलरेशन तो आपकी जीरो हो जाएगी. Why? Because velocity आपकी constant है. Whenever you have a constant velocity, there is no change in speed, there is no change in velocity, तो आपकी acceleration जीरो हो जाएगी. Displacement भी कुछ हद तक जीरो हो सकती है. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो सकती है बट काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर एवर बी जीरो. व्हाई? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट 1/2 एम वी स्क्वायर. आपका मास विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. स्पीड या वेलोसिटी भी क्या है? ग्रेटर देन जीरो. काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. A distance time graph and a speed time graph, okay, show the motion of an object. Perfect. How are the speed and acceleration of the object determined from these graphs? अच्छा जी speed और acceleration किस तरह determine कर सकते हैं? speed क्या होती है? The gradient of distance time graph. acceleration क्या होती है? gradient of speed time graph. ऐसा कहीं option है बेटा? option D is your answer. simple. आगे बढ़ते हैं बच्चों. A student finds the mass of a rock is 65 grams. Okay. She pours 30 cm cube of water into a measuring cylinder. ये initial volume आ गया आपका. She places the rock in water so that the water covers the rock completely. The water level now rises to 55 cm cube. This is your final volume. You have to calculate density. Density बेटा किस तरह निकालोगे? How will you calculate the density? Density is equals to mass over volume. आपका मास क्या है? 65. What will your volume come out to be? Final minus initial. That is 25. Density निकालो बेटा क्या आती है? 65 divided by 25. Density निकालो क्या आती है? 2.6 grams per cm cube is your density. D is your answer. Perfect. A small submarine of mass 1000 kg sinks in water with a constant speed of 2 meters per second. Constant speed का मतलब क्या है? Resultant force जीरो हो जाएगी आपकी. Constant speed का मतलब क्या है बेटा? Resultant force जीरो हो जाएगी. Perfect. What is the resultant force exerted on the submarine as it sinks? A is your answer. बेटा हमेशा 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 आपने ये बात याद रखनी है. Whenever you are in rest or whenever you are at constant speed, आपकी resultant force क्या हो जाएगी? Your resultant force becomes zero. और resultant force zero होने का क्या मतलब होता है? हाँ जी, resultant force zero होने का क्या मतलब होता है बेटा? resultant force zero होने का ये मतलब होता है forward forces is equals to the backward forces and downward forces is equals to the upward forces. Simple. A is your answer. A student drops from a student drops from rest a light ball in air. The ball experiences some air resistance as its fall. ठीक है, air resistance लग रही है ball पे. What happens to the velocity and to the acceleration of the ball during the first few seconds after the release? बेटा ये terminal velocity वाला केस है. जैसे ही आपने बॉल को रेस्ट से ड्रॉप किया
what will happen? Its speed will increase. स्पीड इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा? बैकवर्ड एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. दिस विल न्यूट्रलाइज द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ वेट. आपकी रिजल्टेंट फोर्स क्या कर जाएगी? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस, योर रिजल्टेंट फोर्स विल डिक्रीज. रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी. तो व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी एंड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स? वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी. सी इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6. आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे पढ़ते हैं. The stopping distance of a car at a certain speed is measured in four different situations. ठीक है, हम क्या मेजर कर रहे हैं बेटा? स्टॉपिंग डिस्टेंस. ओके. On a dry road with new tires, on a dry road with old worn out tires. ठीक है, on a wet road with new tires, on a wet road with old worn out tires. The results are shown. Which two results are possible measurements of dry road with old worn out tires? अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, सबसे ज्यादा या यू कैन से मोस्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस कहाँ पे होगा? वेयर विल यू हैव द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कह सकते हो? On a wet road with old worn out tires, this will be your maximum stopping distance. बेटा आपका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कब होगा? व्हेन यू हैव अ ड्राई रोड विथ न्यू टायर्स. तो डब्ल्यू भी बुक हो गया, जेड भी बुक हो गया. डब्ल्यू कैसे बुक हुआ, जेड कैसे बुक हुआ? बेटा देखो गौर करो जरा. इफ यू रियलाइज सबसे ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस कब होगा? जब आपका रोड भी वेट होगा और आपके टायर्स भी क्या होंगे? ओल्ड एंड worn आउट. आपका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कब होगा? जब आपका रोड ड्राई होगा और आपके टायर्स क्या होंगे? न्यू वाले लगे हुए होंगे. तो मिनिमम के लिए 12 आ गया, मैक्सिमम के लिए 40 आ गया. अब आपने क्या निकालना था? व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ड्राई रोड विद ओल्ड worn आउट टायर्स? कौन से दो ऑप्शन बच गए? एक्स एंड वाई. बी इज आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. A spring has a length of 9 centimeter when loaded with a mass of 200 grams. Perfect. ठीक है. The extension mass graph for the spring is shown. अच्छा जी, extension versus mass graph shown है. ओके. देखो, जब आपका 200 ग्राम्स का मास है तो एक्सटेंशन कितनी हो रही है बच्चे? 2 सेंटीमीटर. वेन एवर यू अप्लाई आ 200 ग्राम्स का मास, आपकी एक्सटेंशन कितनी हो रही है? 2 सेंटीमीटर. देखो, स्प्रिंग की टोटल लेंथ इज अ कंपोनेंट ऑफ टू थिंग्स. मेरे ख्याल से मैंने पिछली क्लास में बताया था, स्प्रिंग की टोटल लेंथ इज अ कंपोनेंट ऑफ टू थिंग्स. एल नॉट प्लस एक्सटेंशन. इसमें एल नॉट क्या होती है बेटा? एल नॉट होती है आपकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ. अनस्ट्रेच्ड लेंथ क्या होती है सर? वो लेंथ जब आपके स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स ना लग रही हो. ई क्या है? एक्सटेंशन. और सर एल टी क्या है? एल टी इज योर टोटल लेंथ. परफेक्ट. अब देखो आपकी टोटल लेंथ क्या है? यहाँ पे 9 है. ओके. एल नॉट हमने यहाँ पे रख दिया. एक्सटेंशन क्या है? 2. क्या आप एल नॉट निकाल सकते हो? 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है बेटा कि जब इस स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी, व्हेन यू विल हैव अ फोर्स ऑफ 0 न्यूटन, योर लेंथ विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये बात याद रखना. जब आपके स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी, योर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. परफेक्ट. Now you have to calculate the new length of the spring. आपने new length of the spring निकालनी है. अच्छा जी, आप new length of the spring निकालनी है. When what happens when the 200 gram mass is placed with the 100 grams mass? बेटा अब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग किसके इक्वल होती है? टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एक्सटेंशन. जब आपने 100 ग्राम्स का मास लगाया तो आपकी एक्सटेंशन क्या आ गई बेटे? 1 सेंटीमीटर. और एल नॉट क्या थी? 7 सेंटीमीटर. 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. बी
इज योर आंसर। 8 का आंसर क्या हो गया? बी इज योर आंसर। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी, लेट्स फर्दर मूव अहेड। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स द अर्थ, which arrow shows the direction of force on the international space station when it is at point x? बेटा देख रहे हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। Whenever an object is moving in a circular object, the resultant force acts towards the center. This is your centripetal force. A is your answer. जब भी कोई चीज सर्कल में मूव कर रही होती है, the resultant force acts towards the center. A is your answer. Which expression is equals to impulse? बेटा impulse के दो फॉर्मूला हुआ करते थे, do you remember? Impulse is equals to force into the time for collision, और impulse का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ करता था बेटा? चेंज इन मोमेंटम। कोई लिखा हुआ है यहाँ पे? यस, चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। बी इज योर आंसर for 10. A box with a mass of 4 kg is pulled from rest along a horizontal force by a horizontal floor by a constant force F. अच्छा जी, ये एक मास है 4 kg का, इसको हम रेस्ट से पुल कर रहे हैं बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ F, इस तरह से। ओके। A constant frictional force of 1 Newton acts on the block. अच्छा जी, a constant force of 1 Newton acts on the block like this. Okay. The box travels 1 meter with a velocity of 1.5 meters per second. Okay. The kinetic energy of the block is equal to work done on the box. You have to find the force F. देखो यहाँ पे इसने बड़ी सिंपल सी बात कर दी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ब्लॉक। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन। पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, चलो लेट्स कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। पहले 1/2, मास क्या है 4, वेलोसिटी क्या है 1.5 का होल स्क्वायर। व्हाट डज योर आंसर कम आउट टू बी? 1.5 होल स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। This comes out to be what? 4.5 joules. This is your kinetic energy of the block. अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वल कर देते हैं टू द वर्क डन। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क डन? बेटा वर्क डन में हमेशा याद रखो, द फोर्स दैट यू यूज इज द रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव। 4.5 is equal to the resultant force F minus 1 into the distance, that is 1. क्या आंसर आ जाएगा? 4.5 इज इक्वल टू एफ माइनस वन। ये इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ। 5.5 न्यूटन इज इक्वल टू योर एफ। योर फॉरवर्ड फोर्स एफ कम्स आउट टू बी व्हाट? 5.5 न्यूटन। 11 का आंसर इज डी। ओके। The diagram shows a curved track. A ball is released from the position as shown, at which point is the gravitational potential energy stored in the ball maximum. कहाँ पे gravitational potential energy maximum होगी? At the maximum height. The maximum height is at position A. Simple, easy peasy, nothing complicated. आगे बढ़ते हैं भाई। How does an oil fired power station differ from a nuclear power station? अच्छा जी, oil fired power station nuclear power station से किस तरह डिफर करता है? Let's see out. ठीक है, let's see, पढ़ते हैं। Gases emitted by hot fuel are emitted into the atmosphere in the oil fired power station. Yeah, that's correct. Okay, देखते हैं। An electrical motor is used to lift the load at constant speed. Okay, the gravitational potential energy stored in the load increases. The moving load also has a stored kinetic energy. लेकिन kinetic energy आपकी increase नहीं हो रही because you are moving at constant speed. Only your change in gravitational potential energy is happening, or your gravitational potential energy is increasing. Which expression gives the efficiency? Efficiency का क्या फॉर्मूला होता था? हाँ, efficiency का क्या फॉर्मूला होता था? पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय द पावर इनपुट। तो पावर इनपुट कहाँ पे है बेटा? डिनोमिनेटर में। सिर्फ एक ही ऐसा फॉर्मूला है। वेयर इज पावर इनपुट इन द डिनोमिनेटर? ओनली बी हैज दैट। पावर सप्लाई डिनोमिनेटर में कहाँ पे? ओनली इन बी।
देख रहे हो, पावर सप्लाइड या पावर इनपुट जो है वो डिनोमिनेटर में कहाँ पे, सिर्फ बी ऑप्शन में, बाकी तो बहुत अजीब वेird ऑप्शन लिखे हुए हैं। और पावर आउटपुट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन पर सेकेंड, बी इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते 15 की तरफ। A battery delivers 3000 joules of energy to a small 2-volt electrical motor before the battery stops working. How long is the motor switched on? तो आप क्या कहोगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या है भाई, 3000, पावर क्या है 2, टाइम हमने निकालना है 3000 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 1500 सेकेंड्स इज योर टाइम। बट यू हैव नो टाइम इन सेकेंड्स, तो सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू minutes. Let's convert seconds into minute divided by 3, 6. Seconds a minute में करोगे तो divided by 60 करोगे तो what will happen? 1500 divided by 60, what does your minutes comes out to be? 1500 divided by 60, your minutes comes out to be 25 minutes. 15 का आंसर is D. ठीक है, 15 का आंसर क्या हो गया भाई, D हो गया। Let's further move ahead. A man finds it difficult to hammer a wooden post into a ground. ठीक है, man finds it difficult to hammer a wooden post into the ground. Okay. How can he make the post in? How can he make the post go in more easily? अच्छा, देखो, लेट सपोज आपका एक मैन है जिसके पास एक ऐसी वुडन सी पोस्ट है। ओके, he is finding it difficult to make it go into the ground. What could he do to make the post go in more easily? Make the bottom of the post more pointed. हाँ, ये possible है। If you make the bottom of the post more pointed like this, इस तरह से अगर आप कर दो, what will happen? Your area will reduce, pressure will increase, because pressure is equals to force over area. अगर आप force constant रखते हो तो pressure becomes inversely proportional to area. If you're decreasing your area, pressure would increase. A is your answer to 16. Simple. आगे बढ़ते हैं जी. Let's further move ahead. Which diagram shows the name of the changes of state that correspond to the direction of arrow? Solid से liquid में जा रहे होते हो तो क्या होती है, melting. Liquid से solid में जा रहे होते हो तो क्या होती है, freezing. Liquid से gas में जाते हो तो बेटा क्या होती है, लिक्विड से गैस में जाते हो तो क्या होती है, एनी आइडियाज? लिक्विड से गैस में जब आप जाते हो, यू कैन से व्हाट इज हैपनिंग, इवेपोरेशन फिर भी आप कह सकते हो, वैसे तो होती क्या है, बॉइलिंग होती है, बट इवेपोरेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, बॉइलिंग होती है लेकिन इवेपोरेशन भी आप यहाँ पे कह सकते हो, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ बॉइलिंग। एंड गैस से लिक्विड में जाने के लिए यू डू कंडेंसिंग। A sealed cylinder contains gas is left in direct sunlight, मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और बेटा सील्ड सिलेंडर का मतलब क्या है, सील्ड सिलेंडर का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इवेंचुअली द सिलेंडर एक्सप्लोड होगी। व्हाई विल द सिलेंडर एक्सप्लोड, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। हाउ इज दिस एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द गैस पार्टिकल, ईच पार्ट नहीं, पार्टिकल्स नेवर गेट बिगर, दिस इज एन एब्सर्ड ऑप्शन। पार्टिकल्स कैसे बिगर हो सकते हैं भाई, द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड हिट द सिलेंडर हार्डर एंड मोर ऑफन। यप, ये हो सकता है, सी कुड बी योर आंसर। 18 का आंसर है सी। लेट्स फर्दर मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ है, द गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड अ सिलेंडर बाय अ मूवेबल पिस्टन, द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 20 सेंटीमीटर एंड द प्रेशर इनसाइड इज पी। अच्छा जी, the cylinder, the piston is pulled out a distance of 30 centimeters so that the length of the gas column is now 50 centimeters. The temperature remains constant. What is the new pressure of the gas? कौन सा लॉ लगाएंगे, P1 V1 P2 V2। What is the initial pressure in the cylinder, P? Initial volume क्या होगा, the length 20 into area of cross section। बेटा 20 लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। व्हाट इज प्रेशर P2, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। वॉल्यूम V2 क्या होगा, एरिया इनटू द लेंथ, दैट इज 50, कैंसिल कैंसिल, P इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50 इज योर P2। आंसर क्या आ गया, 0.4 P इज इक्वल टू योर प्रेशर P2। A is your answer। अच्छा जी, pot X and Y are both in a cool room। Pot X contains hot water below its boiling point।
Pot Y is identical to pot X but contains water that is kept boiling by a hot plate underneath. ठीक है, देखो pot X क्या होता है, contains hot water below its boiling point. Pot Y is identical to pot X but contains water that is kept boiling. A constant heat source provide कर रहे हो. Okay. What happens to the average kinetic energy of the particles in the liquid in pot X and to the average kinetic energy of the particles in the liquid in pot Y? ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि pot X में क्या होगा, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे. पॉट एक्स में बेसिकली इवेपोरेशन होगी. ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल escape. पीछे जो आपका लिक्विड है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल ड्रॉप. तो पॉट एक्स में आपकी काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी. सी एंड डी विल गेट कैंसल आउट. अच्छा सर, पॉट वाई में क्या होगा? कैन यू रियलाइज the liquid is boiling in pot Y? That means your temperature is constant. क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी बेटा. तो आपकी पॉट वाई में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंज. बी इज योर आंसर. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. Solid metals are good thermal conductors. How closely packed are these particles and do the metals contain free electrons? Yes. Packing of particles क्या होती है solid में? Very close together. And do the metals contain free electrons? Yes. B is your answer. Simple. 21 का answer is B. Simple. आगे बढ़ते हैं. Cotton is a good thermal insulator. It consists of many threads of cotton which are tangled together to make a material which can easily be pulled apart or compressed. The diagram shows the structure of the cotton wool. Why is cotton wool a good thermal insulator? भाई जी cotton wool जो है, why is it a good thermal insulator? ठीक है, cotton wool जो है good thermal insulator क्यों है? Because each thread is very fine. No, because it has a larger surface area. Because it has no, it has a low density because of the trapped air. नहीं मुझे नहीं लगता. It traps air and prevent convection. Yes, ये हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि air is a bad conductor of heat. ये कॉटन क्या करती है, एयर को ट्रैप करती है और प्रिवेंट करती है कन्वेक्शन. डी इज योर आंसर. या दैट्स करेक्ट. आगे आ जाओ. A metal kettle is heated on a grid above red hot glowing coal. Okay. What are the main thermal energy transfers to the bottom of the kettle and within the water? अच्छा जी, bottom of the kettle से radiation किस तरह ट्रांसफर हो रही है and what happens within water? तो water के अंदर तो convection ही होगी. ये cancel out कर दो A और D के ऑप्शन. ठीक है. What are the main thermal energy through the bottom of the kettle and within the चलिए, बॉटम ऑफ द केटल के अंदर हमारी मेन थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का क्या प्रोसेस होगा बच्चों? जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में, कैन यू सी दिस हॉट ग्रिड एंड द बॉटम ऑफ द केटल आर इन कांटेक्ट. व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, हीट ट्रांसफर अकर थ्रू कंडक्शन. और वाटर या लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफर किसके थ्रू अकर करेगा? कन्वेक्शन. सी इज योर आंसर. The diagram shows two waveforms. Which arrow shows the wavelength of a longitudinal wave? अच्छा जी, wavelength of a longitudinal wave हमें बतानी है. First of all, this is a transverse wave. Let's cancel this out. Can you realize ये एक longitudinal wave है and here you have the center of the compression to the other center of the compression. Wavelength is A. 24 का आंसर is A. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं बेटा. Now let's see this question 25. अब 25 को देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है हमारे लिए. क्या एग्जामिनर ने लिखा है? The bell on a wall outside a classroom rings. A student is standing at point X. ठीक है, ये आपका प्यारा सा स्टूडेंट आ गया. ओके. Shown on the view from above. The door of the classroom is closed and the student in the room at X hears the bell ring. ठीक है, डोर क्लोज हो गया है फिर भी उसको बेल की रिंग सुनाई दे रही है. The door is open. ठीक है,
and the sound heard by the student from the bell gets louder. अच्छा जी, जब जब आप डोर ओपन कर रहे हो तो साउंड लाउडर हो रहा है. What causes the sound reaching the student to be louder? साउंड जो स्टूडेंट को रीच हो रहा है वो लाउडर कैसे हो रहा है? ड्यू टू डी फ्रैक्शन. ए इज योर आंसर. हमेशा हमेशा जब भी आप किसी नैरो गैप के थ्रू साउंड को पास कराओगे या किसी भी वेव को पास कराओगे, द फिनोमेना दैट विल अकर इज नोन एज डिफ्रैक्शन. ओके. अच्छा, वेयर इज द गर्ल्स इमेज? बेटा क्या मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. गर्ल का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लेट से अगर 10 सेंटीमीटर है, तो गर्ल की इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल आल्सो बी 10 सेंटीमीटर. इज योर आंसर. परफेक्ट. Light traveling is in air is incident on a water surface. The refractive index of water is 1.3. The angle of refraction is this. You have to calculate the angle of incidence. कैसे निकालोगे? Refractive index is equals to sine I over sine R. Refractive index है बेटा 1.3. Sine I divided by sine of 40. Can you calculate angle of incidence? Yes. 1.3 into sine of 40 sine inverse. What does your answer comes out to be? 56.6 degree is your angle of incidence. That is roughly equal to 57 degrees. D is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. Let's further move ahead. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? The diagram shows a ray of light passing through a triangular glass block. Which angle is the critical angle in glass? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री. डी इज योर आंसर. आगे बढ़ते भी. A lens is used to produce a magnified image. Okay. What is the linear magnification? Linear magnification किस तरह आएगी भाई? Linear magnification निकालने के लिए what will you do? Height of image divided by what? Height of object. Simple. इमेज की हाइट क्या है बेटा? 15, 16, 17, 17. ठीक है. ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 5 and 7.5. करो जरा इसको डिवाइड. 7 डिवाइडेड बाय 7.5. नो, 17 डिवाइडेड बाय 7.5. आंसर रफली आ रहा है 2 पॉइंट. बल्कि रुक जाओ. ये 5 बॉक्सेस हैं. दीज आर 10 बॉक्सेस. दीज आर फर्दर 5 बॉक्सेस. दिस इज 22.5. अच्छा जी. इमेज की हाइट क्या है? 22.5. ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 7.5. कैन यू कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन नाउ? 3.0 पी. सिंपल. सॉरी फॉर द मिस्टेक. पहले मैंने बॉक्स सही तरह नहीं लिया. अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अ कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हिच एप्लीकेशन यूजेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? अच्छा जी, कौन सी एप्लीकेशन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करती है? स्टेरिलाइजेशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज यूज्ड. अब आ जाओ 31 पे. A student rubs different rods held in his hand. Which rod gains a large electrostatic charge? A polyethylene rod rubbed with a steel magnet? No, a polyethylene rod rubbed with a woolen duster. जब दोनों इंसुलेटर्स को आप रब करोगे, यू विल गेन अ बिगर चार्ज. बी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. Two permanent magnets are placed side by side in four arrangement. In which arrangement do the magnets repel each other? कौन से arrangements में repel करेंगे? When you have like poles. 3 में देख लो north and north. 2 में देख लो south and south. 2 and 3 are your answer. C is your answer. Simple. अच्छा जी, which graph shows how the current changes when the voltage across a resistor of constant resistance is varied? अच्छा जी, current versus voltage graph किस तरह होता है of a resistor? A straight line passing through the origin. 33 का answer is what? 33 का answer is A. Simple, easy peasy, nothing complicated. Two identical resistors are first connected in series and then in parallel. The two resistors in series are connected to a power supply and the current is Is. The parallel combination is connected to the same power supply and the current is IP. You have to calculate the ratio of Is over IP. बहुत easy है, थोड़ा सा गौर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज और पैरेलल सर्किट के पार्टीशंस बना लो. ओके. लेट्स से योर वोल्टेज सप्लाई इज V
and each resistance has a resistance of R. Beta, can you calculate the current IS in this circuit? हाँ सर, V is equals to IR वाला फॉर्मूला लगा देंगे. वोल्टेज इज V. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस R, दैट इज 2R. सो द करंट इन सीरीज क्या हो जाएगा? V divided by 2R is equals to your current in series. Perfect. अब करंट इन पैरेलल को देखते हैं. ये आपका वोल्टेज V है. Let's say you have a resistor of R here. Then you have a resistor of R here. Perfect. Can you calculate the total resistance of this parallel combination? Yes, 1 over RT is equals to 1 over R plus 1 over R. 1 over RT is equals to 2 over R. RT क्या हो जाएगी? R over 2 by cross multiplying. Can you calculate the current in parallel? Yep, easy peasy lemon squeezy. V is equals to current in parallel into total resistance. V वही रहेगा. Current in parallel. Resistance क्या है? R over 2. So 2V over R is your current in parallel. Just put these two equation in black boxes इस तरह से, so that we know कि हम किन equations के साथ deal कर रहे हैं. Okay, now what do you have to do? क्या निकालना था हमने? IS over IP निकालना था. You have to calculate IS over IP. किस तरह निकालोगे? IS क्या है? V over 2R. IP क्या है? 2V over R. अच्छा, डिविजन है, डिवाइड हो रहा है, क्या होगा? V over 2R divided by 2V over R. When you have a division sign, you replace it with a multiplication sign, reciprocate the fraction. R cancel out, V cancel out. What will happen? 1 over 4 is your ratio. रेशियो क्या आ जाएगा? 1 over 4 का. ऐसा कोई आंसर है? 0.25. Yes, A is your answer for 34. This was an actual good question. The output of an AC generator is connected to a lamp. The coil of the generator is rotated at a constant rate, which makes the lamp flash twice every second. Okay. The coil is then rotated at half the rate of rotation. मतलब frequency आपने half कर दी. What happens to the maximum brightness? Maximum brightness भी decrease होगी. Number of flashes भी half हो जाएंगे. A is your answer. बेटा maximum brightness क्यों decrease होगी? If you reduce the frequency, the cutting effect reduces, the EMF reduces, the brightness decreases, or number of flashes भी half हो जाएंगे as you reduce the frequency to half. Which device uses the magnetic effect of an electrical current compass? No fuse, no loudspeaker. Yes, loudspeaker magnetic effect of current use करता है. C is your answer. Let's further move ahead. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? A wire is placed at right angles to a uniform magnetic field. There is a current in the wire and it experiences a force. Perfect. Beam of alpha, beta, and neutrons are fired into the magnetic field in the same direction as the conventional current in the wire. Okay. Which beams experiences a force that is initially in the same direction as the force experienced by the current carrying wire? बेटा देखो, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी. वाई? बिकॉज दे आर न्यूट्रल एटम्स. न्यूट्रॉन्स पे कोई फोर्स नहीं लगेगी इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर न्यूट्रल एटम्स. तो आपने न्यूट्रॉन्स को क्रॉस कर देना है. कौन कौन से ऑप्शंस हट गए? ए और सी हट गए बिकॉज उसमें न्यूट्रॉन्स पे भी आपको फोर्स दिख रही है. ओके. ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ current is same as what? Direction of positive charges. तो बेटा अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना. तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. दे विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स. बी इज योर आंसर. और यहाँ पे एक और पॉइंट भी रिवाइज कर लो. Direction, this is a separate key point. The key point that I'm writing now is a separate thing. The direction of current is what? Opposite to direction of negative charges. Simple. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं.
अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? द डायग्राम शोज द ट्रेस प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन ऑफ एन ऑसिलोस्कोप ड्यू टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट द टाइम बेस्ड सप्लाई ऑफ द ऑसिलोस्कोप इज सेट टू 4 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। अच्छा जी, मतलब हर बॉक्स जो है 4 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डज द ट्रैक लुक लाइक व्हेन द टाइम बेस्ड सेटिंग इज सेट टू 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर? देखो, जब आपकी सेटिंग 4 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर है, दिस इज 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर टोटल टाइम पीरियड? हाँ जी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 into 4 मिली सेकेंड, दैट इज 16 मिली सेकेंड। अब जब आपने टाइम बेस्ड सप्लाई को 2 मिली सेकेंड पे सेट कर दिया है, हाउ विल यू मेक द टाइम पीरियड 16 मिली सेकेंड? अगर आप ऑप्शन सी को देखो, 2 मिली सेकेंड्स, टू 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 टू, ये पूरी वेव अब भी 16 मिली सेकेंड्स में ही कवर हो रही है इसकी आंसर। बेटा, आपने कोई ऐसी वेव चूज करनी थी जिसका टाइम पीरियड अभी भी 16 मिली सेकेंड हो, इवन आफ्टर द टाइम बेस्ड सप्लाई इज नाउ चेंज टू 2 मिली सेकेंड। ओके, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप has a half life of 2.5 minutes. Okay, the isotope is the only radioactive isotope in the radioactive sample. Between time t is equals to 0 and 7.5 minutes, the mass of this isotope sample decreases by 70, ठीक है, microgram. What is the mass of this isotope at time t is equals to 0? देखो, let's suppose its initial mass is x. After 2.5 minutes mass क्या हो जाएगा? x over 2. After further 2.5 minutes mass क्या हो जाएगा? x over 4. After further 2.5 minutes mass क्या हो जाएगा? x over 8. So this difference, the difference between x minus x over 8 is equals to 70 micrograms. You have to find the value of x. How will you do that? LCM multiplied by 8, multiplied by 8. 8x minus x divided by 8 is equals to 70. 7x is equals to 70 into 8. Divide कर दो 7 को, 70 into 8 divided by 7. Cancel, cancel. 80 microgram is your initial mass. B is your answer, 239. Let's further move ahead. When observed on the Earth, the redshift of the light from galaxy X is smaller than the redshift of galaxy Y. Acha ji. Which galaxy is closer to the Earth and which is receding from the Earth faster? अच्छा जी, तो गैलेक्सी Y का रेड शिफ्ट ज़्यादा है, तो गैलेक्सी X will be closer to Earth and galaxy Y will be moving faster because it has a greater redshift. B is your answer again. So this is the end of the paper. If you have any questions, you can ask in the comments.